Good morning, students. Let's start today's class. Sound of A means A. It is already completed. ये सभी complete हो चुका है और this is also although just I am going to repeat this. मैं फिर से इसको आपको पढ़ के सुना रही हूँ. आप उसको उस pronunciation को repeat कीजिए. Okay? Here is last letter, two letter is an. Here also same. It is sound of n. N, a n n. When, v n when. P n pen. M n men. F n fan. C n can. B a n ben. इसमें जो लास्ट जो ए और एन का है सभी में आएगा एन साउंड लास्ट में. जो पहले अक्षर है फर्स्ट लेटर ओनली डिफरेंस इज कम्स. व्हेन वी व्हेन एन नो. पेन पी एन पेन. एम एन मैन. एफ एन फैन. सी एन कैन. बी एन बैन. N sound is coming. It is 88. जो लास्ट का जो टू लेटर इज देयर इज जो पीछे का जो अक्षर है दो उसका आएगा साउंड एट. नाउ से M-A-T मैट. P-A-T पैट. B-A-T बैट. C-A-T कैट. F-A-T फैट. H-A-T हैट. सीरियल M-A-T मैट. इट इज मैट. P-A-T pat. B-A-T bat. C-A-T cat. F-A-T fat. And it is H-A-T hat. And now it is app. A-P app. N-A-P nap. App sound is coming here. App. Now say N-A-P nap. T-A-P tap. T-A-P tap. M-A-P map. L-A-P lap. G-A-P gap. C-A-P cap. Now see there A-P app. It is app sound is coming here all okay. And but the first letter one due to this only the sound is the pronunciation is different but the last is same. जो पीछे का जो है it is same sound is comes. N-A-P nap. T-A-P tap. M-A-P map. Lap. G-A-P gap. C-A-P cap. Now it is R-A-R. R sound A-R-R. यहाँ पे देखिए सब सेम है ना. A-R 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 A-R. जो पहला अक्षर है वो सिर्फ डिफरेंस है. ओके फर्स्ट लेटर ओनली इट इज़ डिफरेंस हियर अदर इट इज़ सेम. इट इज़ B-A-R बार. B-A-R बार. R sound is coming. बार. बार. W-A-R war. T-A-R tar. C-A-R car. F-A-R far. J-A-R jar. Bar, war, tar, car, far, jar. B-A-R bar. War. W-A-R war. T-A-R tar. C-A-R car. F-A-R far. J-A-R jar. Like this way you have to read. Okay students इस तरह से आपको पढ़ना है. See that N it is A-N-N. और पहला जो अक्षर है फर्स्ट लेटर ओनली इट इज़ डिफरेंस हियर. ओके एंड A-T एट का इज एट साउंड इज कमिंग. मैट पैट बैट कैट फैट हेड. इट इज़ एप आर नैप टैप मैप लैप गैप. C-A-P कैप. बार वार तार कार फार जार. ओके read it properly and write in your copy also and send me. आप लिखे इसको एक 2-3 बार लिखते रहिए पढ़ते रहिए बार बार पढ़िए इसको इस प्रोनाउंसिएशन को. ओके हाउ टू रीड दिस विथ स्पेलिंग के साथ आप पढ़िए इसको ज़ोर से. ओके घर में रीडिंग डू दिस वन ऑल दिस. रीड इट प्रॉपरली स्पेलिंग के साथ पढ़िए और लिखिए और लिखने के बाद हमें इसको सेंड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स इट्स योर होमवर्क टिल हियर यू हैव टू राइट ऑल.
Okay, for today's only this much. Tomorrow again we shall start this. I shall repeat it all this tomorrow. फिर से मैं इसको आपको दोहराऊंगी. Okay, for today only this much. Have a nice day.